In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Today we will start class 10, subject Mathematics Science Group, exercise 7.1, unit number 7, trigonometry. First of all, subscribe my channel, like videos, share videos with your friends, click on bell icon and also click on all option so that you have to get updates about my new videos. So let's see, we will start exercise 7.1, question number 4, class 10, subject math. Exercise 7.1, question number 4, express the following angles into radian. ठीक है, एंगल्स और रेडियंस, एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को. ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई बोलते हैं. कार्टेशियन प्लेन मैंने बना के भी दिखाया था आपको, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में. अब 180 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 डिग्री रह जाएगा. इसका मतलब है डिग्री चेंज इनटू रेडियन. हाउ? यू हैव टू मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन. आपने ये बात याद रखनी है. सबसे पहले 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, डिग्री को सेपरेट करना है. हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180. ठीक है, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय 180 से. ये की पॉइंट. 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन. नाउ 0 cancel with 0. 3 1 the 3, 3 6 the 18. So its answer is pi by 6 radian. Now 30 degree equals to pi by 6. Now let's see second part, 60 degree. So same procedure apply here. 60 multiply by 1 degree. First of all you have to separate here. Now 60 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180. डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. क्यों करना है वो मैं यहाँ बता चुकी हूँ. सो पाई बाय 180 रेडियन. 0 कैंसिल विद 0. 6 1 द 6 6 3 द. सो पाई बाय 3 रेडियन. इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 3 रेडियन के. ठीक हो गया. Now let's see third part, 135 degree. Procedure is same which I have told you in above parts. So 135 separate 1 degree. So degree change into radian, you have to multiply by pi by 180 radian. Now you have to simplify. Cut 5 to the 10 and 5 7 the 35. I think it will be 27 and 5 3 the 15 and 5 6 the 30. So again cutting will be possible here. So write separately ताकि आपको visible हो जाए. 36 रेडियन. आप ऊपर भी कट कर सकते हैं. ठीक हो गया. Now 3 you can use here table of 9. 9 3 the 27 and 9 4 the 36. So its answer equals to 3 pi by 4 radian. That is the answer. So 3 pi by 4. इसका मतलब है 135 इक्वल होता है 3 pi by 4 रेडियंस के. नेक्स्ट सी इट्स फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. So first of all you have to write question. 225 degree equals to, separate the degree, multiply by 1 degree. So degree change into radian, so you have to multiply pi by 180 radian. Now after cutting, I think 5 4 the 20 and 5 5 the 25, 5 3 the 15 and 5 6 the 30. So write the remaining numbers. 45 by pi, 36 radian. Now 9 5 the 45 and 9 4 the 36. So its answer is 5 pi by 4 radian. It means 225 degree equals to 5 pi by 4 radian. Now you have to convert into radian. Now let's see its fifth part. -150 degree. So first of all
you can write here minus 150 degree equals to minus 150 multiplied by 1 degree. So 150 minus 150 multiplied by pi by 180 radian. Now 0 cancel with 0. Now 5 3 से कटिंग होगी, 3 5 द 15 and 3 6 द 18. So its answer is minus 5 pi by 6 रेडियन. माइनस हमें बताता है कि दैट इज़ हैविंग नेगेटिव मैयर. यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव मैयर. पॉजिटिव मैयर हैविंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड नेगेटिव मैयर हैविंग क्लॉकवाइज रोटेशन. ये भी मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ. नाउ 6 पार्ट. Its 6th part is minus 225 degree. So same procedure you have to apply here. Minus 225 degree equals to minus 225 separate and separate the degree. Now degree change into radian, so you have to multiply by pi by 180 radian. Now you have to cut. यहाँ पे ये ऊपर हम कटिंग कर चुके हैं. ये भी 225 था, ये माइनस में था, ये प्लस में था. ठीक है, कटिंग हम कर चुके हैं 5 के टेबल से 45 एंड 36. नाउ राइट द रिमेनिंग minus 45 मल्टीप्लाई बाय pi by 36 रेडियन. सो 9 5 द 45, 9 4 द 36. So its answer is minus 5 pi by 4. That is the answer. Now its 7th part is its 7th part. First of all you have to separate degree. So 300 separate, 1 degree separate. Degree change into radian, so you have to multiply by pi by 180 radian. Now 0 cancel with 0. Now 3 10 the 30 and 3 6 the 18. So 10 multiplied by pi by 6 radian. So again cutting is possible here. 2 5 the 10, 2 3 the 6. So its answer is 5 pi by 3 radian. Now its 8th part is. Now we will do its 8th part. 315 degree. Now procedure is same here. First of all you have to separate 315 and separate 1 degree. Whenever you have to change degree into radian, so you have to multiply pi by 180 radian. Now cutting is possible here. I think the table of 5 you will use here. 5 6 the 30 and 5 3 the 50. 5 3 the 15, 5 6 the. Now write the remaining amount. 63 pi divided by 36 radian. Now you have to use here table of 9. 9 7 the 63 and 9 4 the. So its answer is 7 pi by 4 radian. That is the answer. Now it is having just 8th part. Now I hope you have to understand that how you can express the following angles into radian. That was question number 4 of exercise 7.1. So I am going to again told you that you have subscribed my channel, like videos, share videos with your friends and also click on bell icon. So Allah Hafiz.